Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine. This is for class 3rd, subject reasoning, chapter number 19, time. This is our lecture number 5. Beta, in time chapter, subtopic is days of the week. We know 7 days make 1 week. First day of the week is Monday. Second day of the week is Tuesday. Third day of the week is Wednesday. Fourth day of the week is Thursday. Fifth day of the week is Friday. Sixth day of the week is Saturday, and seventh day of the week is Sunday. Okay? बेटा एज वी नो, जैसा कि हमें सभी को पता है कि 7 डेज मिलकर एक वीक बनाते हैं। और फर्स्ट डे ऑफ द वीक क्या है बेटा? मंडे। सेकेंड डे ऑफ द वीक इज ट्यूसडे। थर्ड डे ऑफ द वीक इज वेंसडे। फोर्थ डे ऑफ द वीक इज थर्सडे। फिफ्थ डे ऑफ द वीक इज फ्राइडे। सिक्स्थ डे ऑफ द वीक इज सैटरडे, and seventh day of the week is Sunday. So, how many days are there in a week? There are 7 days in a week. Okay? Now, beta, as you know, 1 week equal to 7 days. अब आपको पता है कि 1 week में कितने दिन होते हैं? 7 दिन. 7 days are there in a week. Now we know the names of all the days of the week. We should learn the names of the days that come before and after. Clear? बेटा अब आप सबको names of all the days of the week पता है. Okay, as ma'am told you, there are 7 days in a week: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Now beta, we should learn the names of the days. हमें days के name learn करने हैं जो that come before and after, जो पहले आते हैं और बाद में आते हैं. Clear? Now beta, I will teach you the concept of before and after with the help of example. Saturday comes before dash. Option A, Friday. Option B, Sunday. Option C, Thursday. Option D, Tuesday. ओके आपको ये बताना है सैटरडे किस दिन से पहले आता है. ओके, हियर 4 ऑप्शंस आर गिवन. You need to select correct option. Which option is correct? So, option B is correct. Okay, Saturday किस दिन से पहले आता है? Sunday से पहले. Okay, so which option is correct? Option B. Answer is option B is correct. Sunday. Clear beta? Example: Tuesday
comes after dash. ट्यूसडे किस दिन के बाद आता है? ऑप्शन ए फ्राइडे, ऑप्शन बी संडे, ऑप्शन सी थर्सडे, ऑप्शन डी मंडे. सो ट्यूसडे किस दिन के बाद आता है बेटा? ट्यूसडे कम्स आफ्टर मंडे. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, आंसर इज ऑप्शन डी is correct. That is Monday. Clear? Homework. Today's homework is question 1. Thursday comes before dash. Thursday किस दिन के पहले आता है? ऑप्शन ए वेंसडे, ऑप्शन बी संडे, option C Friday, option D Monday. You need to select correct option out of these given 4 options. Okay. Question 2. Monday comes before dash. Monday किस दिन के पहले आता है? ऑप्शन ए सैटरडे, ऑप्शन बी संडे, option C Tuesday, option D Thursday. Okay, you need to select correct option out of these given 4 option. आपको इन 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है और ये बताना है कि मंडे किस दिन के पहले आता है. ओके, मंडे कम्स बिफोर डैश. इन होमवर्क question number 3. Thursday comes after dash. Thursday किस दिन के बाद आता है? ऑप्शन ए वेंसडे, ऑप्शन बी थर्सडे, ऑप्शन सी फ्राइडे, ऑप्शन डी मंडे. ओके, you need to select correct option out of these given 4 options. आपको इन 4 में से एक करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है और ये बताना है कि थर्सडे किस दिन के बाद आता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. संडे कम्स आफ्टर डैश. संडे क्वेश्चन 4 में क्या पूछा है बेटा? संडे किस दिन के बाद आता है? ऑप्शन ए सैटरडे, ऑप्शन बी वेंसडे, ऑप्शन सी ट्यूसडे, ऑप्शन डी मंडे. ओके, आपको इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा है. ओके, यू नीड टू सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ दीज गिवन 4 ऑप्शन. नाउ बेटा, इन होमवर्क क्वेश्चन नंबर 5 is question 5. Wednesday comes before dash. Wednesday किस दिन के पहले आता है? ऑप्शन ए थर्सडे, ऑप्शन बी ट्यूसडे, ऑप्शन सी फ्राइडे, ऑप्शन डी मंडे. You need to select correct option out of these given 4 options. Clear beta? You have to do homework carefully. Now beta, we will discuss homework solutions which I had assigned in the previous lecture. Chapter number 19, time, lecture number 4. Our previous lecture was lecture number 4. Homework solutions. Question 1. How many minutes are there in an hour? ओके, क्वेश्चन 1 में क्या पूछा गया था बेटा कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? ऑप्शन ए 50 मिनट्स, ऑप्शन बी 24 मिनट्स, ऑप्शन सी 60 मिनट्स, ऑप्शन डी 30 minutes. So answer is
Option C, 60 minutes. There are 60 minutes in an hour. Okay, 1 hour equal to 60 minutes. So answer is option C is correct. 60 minutes. Okay. Question number 2. How many days are there in 9 weeks? Option A, 7 days. Option B, 9 days. Option C, 53 days. Option D, 63 days. ओके, क्वेश्चन 2 में बेटा क्या पूछा गया है कि 9 वीक्स में कितने दिन होते हैं. ओके, देयर आर 7 डेज इन अ वीक. एक वीक में 7 डेज होते हैं. तो 9 वीक्स में कितने होंगे बेटा? 7 9 द 63. So which option is correct? Option D is correct. 63 days. Answer option D is correct. 63 days. Understood beta? Now in homework solutions we will discuss question number 3. Question number 3. How many minutes are there in 3 hours? Option A, 360 minutes. Option B, 180 minutes. Option C, 30 minutes. Option D, 190 minutes. ओके बेटा, क्वेश्चन 3 में पूछा गया है कि 3 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं. 1 hour equal to 60 minutes. So 3 hours equal to 3 multiplied by 60 minutes. When we multiply 3 by 60, our answer will be 180 minutes. Okay. So which option is correct? Option B is correct. Our answer is option B is correct. 180 minutes. Clear? Question number 4. How many days are there in a month? Option A, 29 days. Option B, 365 days. Option C, 366 days. Option D, 30 days. क्वेश्चन 4 में पूछा गया है बेटा कि एक मंथ में कितने दिन होते हैं. ओके, सो हियर out of these given 4 options, option D is correct. Okay, 30 days. Clear? So answer is option D is correct. 30 days. Clear? Now beta, in homework solutions we will discuss question number 5. Question number 5. How many hours are there in 2 days? Option A, 58 hours. Option B, 68 hours. Option C, 48 hours. Option D, 78 hours. Okay, what has asked in question number 5? कि 2 days में कितने घंटे होते हैं. 1 day equal to 24 hours. Then 2 days equal to 48 hours. So which option is correct? Option C is correct. Answer is option C is correct. 48 hours. Clear beta? Have you cross checked? Good. Thank you.